झलक दिखला जा 11 ने बजा दी हम सबकी 12। मैं बाहर हो गया था तो डेफिनेटली आई वाज ऑन देयर साइड होगी, क्योंकि मैं चाहता था कि ये फॉर्मेट बदल जाए, ये मिथ बदल जाए कि एक वाइल्ड कार्ड एक शो नहीं जीत सकता। एंड मनीषा इज़ वेल डिजर्विंग बिकॉज़ लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, सच में बहुत प्यार करते हैं। एंड उसे लोगों का दिल जीतना बहुत अच्छे से आता है, जो उसने बेखूबी दिखाया भी है स्टेज पे। अभी तक मैं टीवी शोज़ एंड फिक्शन करते आ रहा था। पहली बार मैंने नॉन फिक्शन एंड आई थिंक रियलिटी किया है। अभी तक लोग मुझे सिर्फ एज एन एक्टर जो मैं किरदार प्ले करते आ रहा था उसके लिए जानते थे। नोबडी न्यू मी व्हाट एक्चुअली आई एम, एंड झलक पे दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई एम। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। हेलो सागर, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। कैसे हो आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? एंड आई होप यू आर गुड टू। यस, डेफिनेटली, थैंक यू फॉर आस्किंग। वेल, हम आपसे जानना चाहते हैं झलक दिखला जा 11 की जर्नी कैसी थी, अगर आप एक शब्द में उसको डिस्क्राइब कर पाए। झलक दिखला जा 11 ने बजा दी हम सबकी 12। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, बट इट वाज फैंटास्टिक। इट वाज लाइफ चेंजिंग जर्नी because I learned a lot from that about life also, because usually ऐसे journeys बहुत कम मिलते हैं, and I'm glad that मुझे ऐसी opportunity मिली। यस, बट आप जब किसी शो में एंटर करते हो तो आप बहुत मेहनत करते हो, और आपने डेफिनेटली किया भी है। कोरियोग्राफर की मेहनत है, उसके पीछे पूरी टीम की मेहनत होती है, बट इतने करीब आकर जब आप वो चीज़ हासिल नहीं कर पाते हैं, वो जीत नहीं देख पाते हैं, तब बुरा लगता है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? I think झलक दिखला जा has I think कोई भी contestants, of course everybody likes to win, but क्या है कि अगर इतने सारे contestants हैं and एक ही को जीतना है, तो everybody is aware of that fact, and I was too, and being a wild card I was very aware that it is going to be really tough to win that trophy, but what is more important is the journey, because that I think everyone accepts, and even the judges accepted that fact, and in fact they made us realize कि more than winning anything, the journey that you carry forward with yourself, that is more important. I think मेरे लिए भी ये वही important था कि ऐसे स्टेज पे आना एंड इतने बड़े स्टेज पे आके अपने आप को एक्सप्लोर करना, एंड इस तरीके से करना कि आपने कभी शायद ज़िंदगी में, मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं कभी एरियल करूँगा या रॉस्ट्रम एक्ट करूँगा। बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स या आर्टिस्ट या सेलिब्रिटीज सबकी मतलब हालत ख़राब होती है वैसे मतलब एक्ट्स करने के, एंड luckily I got that opportunity, and मैं झूठ नहीं कहूँगा कि I was also very scared, but जैसा आपने कहा कि टीम का सपोर्ट रहता है एंड कोरियोग्राफर्स बहुत मेहनत करते हैं, एंड आई रिमेंबर कि मैं 9 बजे सुबह आता था और रात के 2 बजे तक रिहर्सल करता था, और उनका प्रोटोकॉल कुछ ऐसा है कि जब तक सेलिब्रिटी सेट पे हैं एंड रिहर्स कर रहे हैं, नोबडी इज अलाउड टू लीव। तो लास्ट तक ऐसी हालत हो गई थी कि आके मेरे सामने हाथ जोड़ते थे, बोलते थे भाई आपको घूस दे देते हैं या कुछ दे देते हैं, प्लीज़ आप चले जाओ ताकि हम भी अपने घर जा पाए। बट आई न्यू दैट मैं एक वाइल्ड कार्ड हूँ, एंड जैसा आपने कहा कि ट्रॉफी के करीब जैसे जैसे जा रहे थे, तो मेरा भी ऐसा थॉट था कि यस आई वांट टू बी इन द फिनाले एंड विन द ट्रॉफी। कोशिश पूरी थी, बट जैसा शो का फॉर्मेट है कि सिर्फ परफॉर्म करने से नहीं होने वाला, जनता का सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड विच इज़ फेयर इनफ। बहुत सबकी अपनी अपनी जर्नी है, एंड देयर वर पीपल हु आर मोर फेमस देन मी, सो फैक्ट्स आर फैक्ट्स। Manisha was also a wild card contestant and she won the trophy. What do you have to say about that? I think well deserved. उसने I think I really wanted her to win, and apart from that, I think me, her, and Dhanashree, I think we three were the only wild cards left, and मतलब मैं बाहर हो गया था तो डेफिनेटली आई वाज ऑन देयर साइड होगी, क्योंकि मैं चाहता था कि ये फॉर्मेट बदल जाए, ये मिथ बदल जाए कि एक वाइल्ड कार्ड एक शो नहीं जीत सकता। एंड मनीषा इज़ वेल डिजर्विंग बिकॉज लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, सच में बहुत प्यार करते हैं, एंड उसे लोगों का दिल जीतना बहुत अच्छे से आता है, जो उसने बेखूबी दिखाया भी है स्टेज पे। सो येस, वेल डिजर्व्ड, एंड बीइंग मतलब डांसिंग उसे बहुत पसंद है, प्रोफेशनली ट्रेन भी है, बट उस चीज़ को प्रूव करना इतने बड़े स्टेज पे, एंड आई थिंक उसका भी पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस था, तो शी डिड वेल, वेल डिजर्व्ड। जब आप कोई शो करते हैं या किसी प्रोग्राम में जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, कुछ भी, तो एक पॉइंट ऐसा होता है जो आपको हमेशा याद रह जाता है, कोई ऐसा एक मोमेंट याद रह जाता है। तो इस शो में ऐसा कौन सा पल था जो आप हमेशा उसको पूरी जिंदगी याद रखेंगे? I think every time, I don't know, God's grace, I think
आई डोंट नो क्या किया मैंने अनुपमा में कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ आए ना, मतलब गेस्ट सेलिब्रिटीज़, मतलब मूवी स्टार्स एंड एवरीवन, आउट ऑफ मोस्टली एवरीवन, दे recognized me and for my work and they praised on such a big stage. मैंने सिर्फ एक का वीडियो मतलब रवीना टंडन का डाला है इंस्टाग्राम पे, इधर जूही चावला, शाहिद कपूर, प्रीति सैनन, everybody came and praised my work and they were, I didn't know such people know me also, and it's a huge deal for an actor like me who has been working in the TV since past 6.5 years, क्योंकि TV का exposure मतलब उनकी ऑडियंस अलग होती है, and if I'm able to crack that audience and get out of that zone and come into the light of such people, so I think it's an achievement for me. And इतने बड़े स्टेज पे सबके सामने मेरी तारीफ करना, तो I think I must have done something really well in that show, and जिसकी वजह से मैं झलक भी मिला मुझे, और झलक जाके इतने इतने बड़े लोगों से मुझे तारीफ भी मिली। तो I think that is one thing शायद लोग क्रेव करते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स, लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है एक्टिंग करते करते, और वो प्रेज की जो क्रेविंग होती है, and I think I have got instant, जैसे मैंने अनुपमा के instant मुझे ऐसे reactions मिले, तो I'm really grateful for that. अब अनुपमा की बात हो ही रही है, तो जानना चाहेंगे कि स्टार कास्ट से कोई कैसा मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा था आपको? I was very surprised कि होता है ना कि जब आप शो में रहते हो तो आपकी बॉन्डिंग सबके साथ अच्छी हो जाती है and you become like a family. I'm glad that ये फैमिली मेरे साथ शो खत्म होने के बाद भी वैसी ही है, and they each and everyone supported me throughout. Of course limitations बहुत सारे हो जाते हैं because rival channel and everything, but I think after every performance everybody used to text me and message me out of their busy lives and schedule, how it is, and उसके बावजूद in fact आशीष तोशु जो मेरे भाई बनते हैं शो में, he had come to meet me especially during my first performance, and Nishi also who's playing right now, Dimple, and वो भी आई थी। इनफैक्ट वो तो मेरे 2-3 परफॉर्मेंसेस भी उसने लाइव आके देखे हैं जिस दिन शूट हो रहा था, just to support me, just to have that, because I am not from Mumbai and I have these people only like my family, and if such people come and support me, I think these are my pillar of strength. So yeah, it was great. ओके, तो झलक तो अब हो गया, इसके बाद क्या कोई और रियलिटी शो करने की आपकी इच्छा है, जैसे बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, या कोई और डांसिंग रियलिटी शो? Yeah, I think अभी तक मैं टीवी शोज एंड फिक्शन करते आ रहा था। पहली बार मैंने नॉन फिक्शन एंड आई थिंक रियलिटी किया है, एंड आई रियलाइज दैट both worlds are very different, and very different from each other in every aspect, and surprisingly I liked it. So, and also the journey of Jhalak taught me कि I don't know my limits actually, so I'm not going to judge myself कि ये मुझसे होने वाला है या ये मैं करूँगा या मैं नहीं करूँगा. Everything that I think is going to work in a very positive way for me, I will give it a try, because this is what I thought before joining Jhalak also, कि शायद ये मुझसे नहीं हो पाएगा. And see, 8 हफ्तों में से 7 हफ्ते मैंने परफॉर्म किया. फिनाले में out of all the contestants only 6 were called, and Yes. I was one of them. So अपने आप में एक अचीवमेंट है मेरे लिए. I don't know, it might be very normal for other people, but it's very overwhelming for me कि लोगों ने, शायद मैंने कुछ अच्छा किया होगा उस स्टेज पे भी, तभी मुझे फिनाले में भी बुलाया और परफॉर्म करवाया. And the channel appreciated, the makers appreciated everything I did, and there was a growth in my journey. So yeah, I don't know myself कि अगर मैं खतरों करूँगा, of course मुझे मतलब I am very doubtful कि शायद अभी भी हूँ कि शायद वो मुझसे होगा या नहीं होगा, but yeah, given a chance I will do it. Same goes for Big Boss, क्योंकि पिछले साल झलक से पहले मुझे मिला था ऑफर, and somehow it didn't work out because I only said no because मेरे parents बहुत doubtful थे कि I think you're going good as an actor, why do you want to just indulge because of fame and everything. I think it's not about fame and everything, but it's also about such platforms give you a lot of exposure, जहाँ मतलब बहुत दरवाजे खुल जाते हैं आपके लिए, जिसकी I think हर किसी को तलाश होती है, and Jhalak has opened a lot of doors for me, and it has made me realize कि अभी तक लोग मुझे सिर्फ एज एन एक्टर जो मैं किरदार प्ले करते आ रहा था उसके लिए जानते थे. नोबडी न्यू मी व्हाट एक्चुअली आई एम, एंड झलक पे दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई एम, एंड जितना उन्होंने मुझे देखा, they loved it and I loved it because they were really happy with the fact yes, finally we are getting to know Sagar as Sagar, and
मुझे भी नहीं पता था और उनको भी नहीं पता था कि शायद इतना अच्छा डांस मैं कर सकता हूँ। तो आई डोंट नो बिग बॉस पे क्या करेंगे या खतरों में क्या करेंगे, गिवन अ चांस आई विल। ओके, आपकी फैन फॉलोइंग तो अनुपमा से ही है, और उसके पहले भी आपने जो शोज के जैसे इंटरनेट वाला, लव, उन उस टाइम से आपकी इतनी फैन फॉलोइंग रही है, स्पेशली लड़कियों में, और अब झलक में तो और भी बढ़ गई है। तो हम जानना चाहते हैं कि उनका दिल आप कैसे तोड़ेंगे, ये बता के कि आपकी लाइफ में क्या कोई समवन स्पेशल है? आई थिंक आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट, बट ऐसा नहीं है कि दिल तोड़ेंगे, बिकॉज आई थिंक जितनी भी लड़कियां हैं वो मुझे बहुत अनकंडीशनली प्यार करती हैं। तो नो मैटर व्हाट, इवन इफ आई एम विद समवन और नॉट, दे आर गोइंग टू लव मी एंड आई एम श्योर अबाउट दैट। आर यू asking me if I'm with someone, then of course I'm going to say no, because I'm really not looking forward for all such things, because there's a lot of commitment that comes on the way, and I respect all of that. When I'm ready, I'm not scared of it, I'll come and take it. Okay, what according to you is love? अगर पूछा जाए, Love is I think anything that makes you feel good about you, and someone, if you talk about a person, like अगर आपको किसी से आप पूछो मुझसे कि how do you love someone or how do you feel loved by someone, I think it's mostly about something that which brings you the closest to yourself, being yourself and still being loved, मतलब loved as in appreciated for what you are, where you don't have to pretend and where you can be happy, and of course हर किसी को एक support की ज़रूरत होती है. So anything that makes you happy and strong, I think that is love. And it cannot be defined by words. It's just a feeling, just the feeling that makes you feel really that yes, whatever you think in your mind, that you become because of that feeling. So for me, love is such, because fans के love के बिना मैं यहाँ पे नहीं होता. So that is love. I miss my dog. So that is love. Even I am not with him, but still that bonding keeps me alive and keeps me really excited about whenever I'm going home, and जैसे माँ बाप का प्यार होता है, even मतलब I have been a boarding school guy, तो मैं बचपन से अपने mom dad से बहुत दूर रहा हूँ, but that doesn't change the fact कि they will support me or not, and they just be there for me. So anyone who just makes you feel good about yourself, I think that's it. आजकल का जो जनरेशन है, इसमें लोग कैजुअल सिचुएशनशिप्स ये सब बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट यू आर रोल मॉडल टू सम पीपल, आप कुछ लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट टू दोस पीपल? I hope I'm not inspiring casual relationships for later, because I know it's very common these days. I think I don't know what to say about that. Matlab, if you talk about me, I have really never thought about it in a way. I would not lie कि I know about it and it's very casual these days. I'm aware of that fact also. I'm not going to be someone who just says like कि हाँ मैं ये सब नहीं करता या ये सब I'm not, I don't know, this is like, oh I'm very far away from all this. I'm very much aware of it, and the only thing I would say that कि life में अगर आप focused हो तो I don't think I think these are very much distractions, and there will be ultimately a time where you will find someone and you will settle with it. And before that, I think people need to settle with their careers, because that is also very important. And these days जितना casual ये relationships होते जा रहे हैं, उतना casual I think careers भी हो गया है, because nobody knows what they are going to do in next 5 years. So better, I think that's what I want to say to people, कि rather than it's very casual, ये भी casual ही चल रहा है, तो ज़्यादा casual में आप भी casual ही हो जाओगे. So pretty be serious in life also, and just focus on your life so that everybody is proud of you. And ultimately, when time comes, I think everybody finds someone they'll settle. Okay, lastly आपसे जानना चाहेंगे, what are your upcoming projects? ये मैं भी जानना चाहता हूँ actually, because it is, I don't know how to explain. It's very difficult when you I've been really lucky that I've got shows in my hands that have been the top class shows. Like if you talk about Balika Vadu, if you talk about Ishme Majawa, if you talk about Kaise Yaariya, if you talk about Anupama, of course, and now Jhalak and Internet Wala Love, these have been like shows I've been lucky and
I've been really grateful that I got to be a part of this. Of course, none of it was easy, and none of it, matlab, you might say that I've been, like I'm saying, I'm lucky, but also it has taken a lot of hard work to be here. But yes, you know, जैसा मेरा ग्राफ जा रहा है ना, अब मुझे और ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि I need to maintain that, and I think very differently about myself, that आई हैव नॉट रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ कि मैं शायद टीवी ही करूँगा या शायद मैं अब फिल्म ही करूँगा बिकॉज आई हैव डन द नंबर वन शो. आई एम ओपन टू ऑल टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ, बट डेफिनेटली दोज हु विल push me to my limits in a way that, you know, I need to be troubled, because if I'm not troubled mentally and physically, I'm not going to, you know, push myself to those limits where I, you know, surprise myself. So yeah, that's what I'm expecting, whether it be Khatro Ke Khiladi, whether it be a Big Boss, whether it be some fiction show, anything, just it needs to push me to a certain limit. जैसे झलक में ना, I realized with that show that उसमें ना मुझे एक ऐसे लिमिट तक पुश किया where आई थिंक पहले हफ्ते में मैं आई वॉज हैविंग 8 पिल्स, लाइक जिसमें 2-3 पेन किलर्स थे, एक मसल रिलैक्सेंट था, मल्टी वाइटमिन्स थे, सो मेनी टैबलेट्स आई वॉज हैविंग, एंड आई वॉज लाइक आई डोंट नो व्हाट शो आई पिक्ड अप, एंड मैंने क्यों ही ये शो लिया, बिकॉज आई वॉज लाइक मेंटली आई वॉज स्ट्रेस्ड, बिकॉज वोटिंग भी करानी है, ये भी कराना है, एंड आई हैव जीरो एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दिस. सो या, दैट जर्नी हैड टॉट मी कि यू नो, अगर मैं अपने आप को लाइफ में पुश नहीं करूँगा ना, तो मैं कभी, मतलब जिस लेवल पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे रहने के लिए, और मैं भी जो मैंने सपने देखे हैं कि शायद मैं इस टाइम तक इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा, तो मैं शायद वो कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा. आई एम ओपन टू ऑल टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स, एंड यस, इट जस्ट नीड्स टू ट्रबल मी अ लॉट.